Namaskar and a very good morning. Welcome to the audio class from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. कल US economic data was decisively negative for the US dollar. पहले the inflation indicator, it is not the CPI, ये PCE deflator है. That is pointing towards further slowdown in inflation or slow in inflation. We have talked about a number of times over the last couple of months कि various indications are that the US inflation is going to slow dramatically over the next 5 to 6 months, and that's exactly what is playing out. And that's also the reason why कि Fed ने 50 basis points के बारे में बोला है for the December meeting, and the market is pricing in that the Fed will finally stop hiking after 100 basis points. अभी 4% है, 5 के आसपास जाके Fed is going to stop. दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर था ISM मैन्युफैक्चरिंग, और वो क्लियरली हैज मूव टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन. मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज स्लोइंग डाउन ड्रामेटिकली. सो अ स्लो इकोनॉमी, स्लो इन्फ्लेशन, बैड न्यूज़ फॉर द डॉलर. इसके कारण ये इकोनॉमिक डेटा के कारण यूएस बॉन्ड यील्ड्स केम अंडर प्रेशर. डॉलर इंडेक्स फेल. डॉलर रुपी ऑफशोर में इज ट्रेडिंग अराउंड 81.10 के आसपास. और आज द इम्पॉर्टेंट यूएस एनएफपी और यूएस जॉब्स रिपोर्ट है. अगर वो भी सॉफ्ट आता है शाम को, देन द डॉलर रुपी कैन मेक अ रियल अटेम्प्ट टू ब्रेक थ्रू दैट 80-90 सपोर्ट. अगर 80-90 सपोर्ट के नीचे ये सस्टेन हो जाता है स्पॉट, द नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इज गोइंग टू बी 80.5. बट 80.5 इज गोइंग टू बी इन आवर ओपिनियन वीक सपोर्ट, क्योंकि वो एक बार ही उस लेवल को टेस्ट किया था अराउंड 14th of November. सो इट्स गोइंग टू बी अ वीक सपोर्ट. बट द 80-90 के नीचे नेक्स्ट इज 80-50, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स द 80-80-10 द मेजर सपोर्ट कम्स इनटू एक्शन. बट 80-90 इमीडिएटली एक मेजर सपोर्ट जोन है. बट द ड्रिफ्ट एंड द बायस इन डॉलर रुपी इज क्लियरली डाउनवर्ड, क्योंकि जो ग्लोबली एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है ऑन द यूएस डॉलर, and the long positions are being unwound, shorts are being built in against some currency pairs. उसमें dollar rupee is going to benefit क्योंकि FPI flows are positive into India. Sentiment is very positive towards India and Indian rupee, जिसके कारण Indian rupee can benefit in spite of the fact कि जो forward premium है वो काफ़ी कम है. In fact, it's at decadal lows, क्योंकि the forward premium matters a lot for emerging market currency, क्योंकि जो carry traders है who sell the dollar rupee in forward and then they wait till expiry and roll, जो actually ब्याज बदला करता है in terms of equity market parlance, उनके लिए the return is pretty low. But in spite of that, the sentiment इतना positive है, flows इतना inward है, इसके कारण डॉलर रुपी का ड्रिफ्ट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड. द क्वेश्चन इज वेयर विल आरबीआई कम इन एंड स्टार्ट बाइंग डॉलर्स. प्रीवियसली वी हैड सीन कि आरबीआई टू बाय डॉलर्स बिलो 81. तो हो सकता है 81 के नीचे दे कैन वंस अगेन गेट इनटू एक्शन. बट एज आई सेड 80-90 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे 80.5 अ वीक सपोर्ट एंड देन 80 लेवल्स. हाउ टू ट्रेड? सेल ऑन राइज इज द थिंग, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चरली 82 के ऊपर डॉलर रुपी जाके एस्टैब्लिश नहीं होता है, दिस डाउनवर्ड प्राइस स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू चेंज. बिकॉज हाउ डू वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड इज चेंजिंग? देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड दैट. वन इज द प्राइस एक्शन, और दैट इज क्लियरली सेइंग 82 के ऊपर जब तक ये नहीं जा रहा है तब तक इट इज अ सेल ऑन राइज, बिकॉज इट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड. और फंडामेंटली globally things has to change. Dollar index has to rise quite a lot for dollar rupee to for us to say that the trend is the macro backdrop has also changed for dollar rupee from bearish to bullish. तो इसके लिए ये दो factors है, the price action and the macro backdrop. Both are indicating that lower prices could be in store for USDINR. So there are a couple of ways to express it. You can use futures to sell, बट फ्यूचर्स में आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा. द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स आर 81-50, 45-50 के आसपास, और उसके बाद आता है 81-85 के आसपास ऑन द स्पॉट. एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट थ्रू बाय सेलिंग आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस. दैट ऑल्सो यू कैन डू. वीकली ऑप्शन सेलर्स आर एडवाइज टू स्टिक टू, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो स्ट्रैडल इज फाइन, बिकॉज उसमें प्राइस इरोजन इज फास्टर. आप अगर पोजिशनल कर रहे हो तो देन यू शुड लुक एट स्ट्रैंगल
or our preferred strategy is an iron fly. Because an iron fly, it is the hedge strategy, margin requirement is low, and you can hold the trade till expiry. So अगर intra week कोई अगर false breakdown भी होता है, that you can in that case your stops won't get hit because it's a hedge strategy. So iron fly will be our preferred trade. You can even do a butterfly. Now this will be a bearish butterfly. Like in uptrend we were doing bullish butterflies. यहाँ पे you can do a bearish butterfly using put options. So these are the couple of strategies which you can do using options and futures में जो मैं आपको बताया कि you can sell on rise, you can sell in tranches so that your stop loss can be larger. But the trend is downward. 80-90 के आसपास is a major support on the spot. If that breaks, then we are looking at further lower levels. Cross currencies में euro, pound, yen, ये तीनों currencies will trade with an upward bias. आज important data, as I said, is US jobs report. वो will be released after our markets close. So the impact will be seen on Monday morning once we open for trading. So that's it, folks. Anindya Banerjee signing off. A fantastic day ahead.